जय जगन्नाथ। आज यूट्यूब क्लास को समस्त को स्वागतम। तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर में पढ़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज क्लॉज एंड फ्रेज। सो लेट मी फर्स्ट टेल व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज इज a group of words having incomplete sense. Clause is a group of words having a sense, though that is incomplete, but it is having subject and predicate. तो आम ओडिया रे कहि परिबा फ्रेज होची शब्दांश, क्लॉज होची वाक्यांश। तो वाक्य रे एक अंश जेउथरे कि कर्ता एवं क्रिया निहित थाए किंतु ताहा पूर्ण अर्थ प्रकाश करू न थाए। गोटे एग्जांपल क्लॉज रो दबा जेमति कि व्हेन इट रेन्स। तो एठी सब्जेक्ट भी अछि, प्रेडिकेट भी अछि, सब्जेक्ट वर्ब अछि। जेमति कि व्हेन इट सब्जेक्ट अछि, रेन्स भी अछि। तो किंतु संपूर्ण अर्थ होनी। दिस इज क्लॉज। फ्रेज कौन? शब्दांश। इन फ्रंट ऑफ, बाय टेंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, crocodile's tears. So these are all phrases. Phrases are figural in character, phrases are literal in character. So there are different types of phrases are there. So in this class we are supposed to have a discussion about clause. First, there are three types of clause. One is noun clause, second one is adjective or relative clause, and the third one is adverb clause. So in a nutshell we are going to discuss. Let me first discuss what is noun clause. The subordinate clause is of three types: noun clause, adjective clause or relative clause, and adverb clause. What are the conditions and which criteria we can say that subordinate clause is functioning as noun clause? There are 5 functions in order to be fulfilled for that. The first condition is that if the subordinate clause is placed at the beginning of the sentence, then it functions as noun clause. If the subordinate clause functions as the subject of the sentence, if the subordinate clause functions as the subject of the sentence, it is noun clause. An example it will make it clear. Whatever you say is true. So here the subordinate clause is whatever you say, and this is the subject. So as it is the subject, it functions as noun clause. Then the second criterion, if the subordinate clause functions as object of the sentence, it is also noun clause. An example will make it clear. Object you already know. What of the verb? So Ram said that he was happy. Ram कहला कि से खुशी अछि. So that he was happy होची subordinate clause, and it is answered in what? Ram कहला. What he said? That he was happy. The subordinate clause functions as object of the sentence, so it is noun clause. Then if the subordinate clause functions as complement of the sentence, it is also called noun clause. As you know, complement always, before complement, be verb always takes complements. So an example I am giving of complement, the matter is that they have already planned the program. The matter is that they have already planned the program. That they have already planned the program, subordinate clause. And before the subordinate clause, the be verb is there. As you know, be verb always takes complements. So here the subordinate clause functions as complement of the sentence, so it is noun clause. Then the next one is object of preposition. That means before the subordinate clause, a preposition is there, and it is answered in also what? The situation depends on how you tackle the problem. The situation depends on how you tackle the problem. So here the subordinate clause is how you tackle the problem. And what is the antecedent? On. That means the subordinate clause functions as object of preposition. And the last one criterion is if the subordinate clause functions as noun in apposition to, the subordinate clause is also called noun clause. Example, the news that Mr. Mohapatra is alive is true. The news that Mr. Mohapatra is alive is true. So here the subordinate clause is that Mr. Mohapatra is alive. That Mr. Mohapatra is alive. And the main clause is the news is true. So that Mr. Mohapatra is alive, apurbu antecedent kon achi news. That means noun ta hochi news. The mane subordinate clause ra antecedent ati achi noun. Jehetu noun next to noun होची opposition to माने next to noun एवं noun को मते replace भी से करूची. What is the news? Total
main clause को replace करछो it is the news that Mr. Mohapatra is alive तो एक रे तो antecedent noun थिबो एवं से main clause टाकू subordinate clause replace करथिबो तो से केस रे हम को noun in a position 2 so here the subordinate clause functions as noun in a position 2 so it is noun clause so there are 5 criterions if the subordinate clause fulfills then it is called noun clause so what are the 5 criterions if the again I am not so lab speaking if the subordinate clause functions as subject of the sentence it is called noun clause if the subordinate clause functions as object of the sentence it is called noun clause if the subordinate clause functions as complement of the sentence it is called noun clause if the subordinate clause functions as noun in opposition to it is called noun clause if the subordinate clause functions as object of preposition it is called noun clause then proceed to relative clause or adjective clause as you know adjective is a noun modifier in the similar fashion we can say that adjective clause is also a noun modifier when the total entire adjective clause modifies the noun in the head noun in the sentence then we can say it relative clause relative clause is of two types one is defining relative clause the other one is non-defining relative clause the defining relative clause कौन and defining relative clause जो subordinate clause टा सही sentence रो head noun प्रति अपरिहार्य माने आमे ताकू व्यवहार करिछि केवल चिन्हट करिया पई सेठी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें सेंटेंस रो एक्सक्लूड करि परिबा नाही तो सेउडा होछि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जोटी सबऑर्डिनेट क्लॉज ता हेड नाउन पई गोटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो सेटा होछि नॉन डिफाइनिंग त डिफाइन करिया आवश्यक पड़नथिला कि त गोटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देछि तो when the subordinate clause gives basic information about the noun it is defining relative clause when the subordinate clause gives extra information of the noun it is non-defining relative clause so let me give an example of defining relative clause the person who has put on red t-shirt standing there is my uncle the person who has put on red t-shirt standing over there is my uncle तो it is subordinate clause किए who has put on red shirt standing over there तो ये जो subordinate clause टा कहा को modify करछि तो man लोकटी जे की नाली शर्ट पिंदिछि एवं सेठी ठिया हेछि से होछि मो अंकल से जो लोकटी हेड नाउन इट सेंटेंस किए हेड नाउन किए द पर्सन तो से जो द पर्सन को हम डिफाइन करले काहेकि ना मेन क्लॉज कोन द पर्सन इज माय अंकल लोकटी मो मामू संगे संगे प्रश्न आसीबो को लोकटी तो एटी हमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज टा के आवश्यक अछि इट इज बेसिक इट इज गिविंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एटी हम एक्सक्लूड करि परिबा नाही तो when the subordinate clause gives basic information about the noun it is what it is defining relative clause जदि extra information हिदिबो तल not defining और example दोछि Mr. Mohapatra who lives in Brahman silo is a gentleman Mr. Mohapatra who lives in Brahman silo is a gentleman तो who lives in Brahman silo subordinate clause तो से कहा को modify करछि Mr. Mohapatra को तो एटी मेन क्लॉज ता कोन Mr. Mohapatra is a gentleman the sentence is complete तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज रो किसी आवश्यक नथिला गोटे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देछि कि मिस्टर महापात्र जे की ब्राह्मण शैली रहंती जदि जे की ब्राह्मण शैली रहंती आको रिप्लेस ताको उठेई दबा किछि प्रॉब्लम नै मिस्टर महापात्र इज अ जेंटलमैन त माने सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेंटेंस when the subordinate clause can be excluded from the sentence it is non defining when the subordinate clause cannot be excluded from the sentence it is defining relative clause so this is about relative clause let's proceed to adverb clause and there are so many adverbs when the subordinate clause functions in different adverbials that means what where when indicating manner indicating place indicating time indicating frequency indicating degree indicating comparison indicating concession in those cases the subordinate clause will function as adverb clause the object function करनथिबो indicating manner that means subordinate clause manner को indicate करथिबो subordinate clause place को indicate करथिबो subordinate clause time को indicate करथिबो subordinate clause concession को indicate करथिबो subordinate clause different other adverbials like frequency को indicate करथिबो comparison को indicate करथिबो तो गोटे दिटा एग्जांपल म दउची केंदी manner को केंदी indicate करूची do as I am giving the instruction do the work as I am giving the instruction
तुम्हें कामटी सही भली कर जेमती मु तुमको इंस्ट्रक्शन दउची हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आज आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज टी कोन इंडिकेट करूची सही भली भाबरे कर जेमती मु कहूची ता माने मैनर को इंडिकेट करूची तो हियर द सबऑर्डिनेट क्लॉज functions as adverb clause but a place example दउची suppose I went to Cuttack where my friend lives I went to Cuttack where my friend lives that means where my friend lives a place को indicate करूची subordinate clause टा तो ए भली भाबरे subordinate clause place को time को manner को comparison को indicate करथिबो comparison example दउची you work harder than you think faster तो एठी then you think faster ता सबऑर्डिनेट क्लॉज एटा कंपैरिजन then असला माने कंपैरिजन में प्रश्न ही आसिला जोठी एडवर्बियल लिंकर that indicate करथियो सेटा कंपैरिजन ही हबो that तो ए बडी भाबरे adverb clause different functions indicate करछि this is about adverb clause there are so many things to be discussed in this context whenever we'll get a new class that will discuss it in details. By the way, if any confusions are there, you can give in your comments. Next, in this class, I am supposed to discuss about phrase. Already I have told what is phrase. In this class, phrase is a group of words having incomplete sense. And phrase is having no subject and predicate. Remember it. Phrase रे subject predicate न थाए. Clause रे थाए. सेतिपे clause को वाक्यांश को आ जाए. Phrase को शब्दांश को आ जाए. Example में देइछि phrase रो in lieu of, by dint of, due to, so that. So there are different phrases are there. Instead of. So phrases are figural in character. Phrases are literal in character. जब direct meaning से show करते हैं तो हम literal in character बोली कहूँ. Figural meaning केमती कहूँ ना जब वाले से indirect meaning बोले show करती. जैसे रूढ़ी टाइप रो crocodile steer छलना कांड ये एक phrase. किंतु से वाले परोक्ष अर्थ प्रकाश करूँगी. जब वाले phrase का परोक्ष अर्थ प्रकाश करे तो वो figural in character बोली हमें कहूँ. मत कंपैरिजन कर ले हमें तो डायरेक्ट अर्थ प्रकाश कर इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट अर्थ प्रकाश को सामना रे लिटरल इन कैरेक्टर तो फ्रेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स नाउन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज सो इन दिस क्लास वी आर सपोज्ड टू डिस्कस अबाउट नाउन फ्रेज व्हेन देयर इज अ सिंगल नाउन इन द सेंटेंस if that single noun is followed by a group of words that becomes a noun phrase suppose mu kahibi Mr Mohapatra is a gentleman तो एटी हेड नाउन किए मिस्टर महापात्र तो वर्तमान मिस्टर महापात्र को फ्रेज कर देबी मिस्टर महापात्र विल फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिस्टर महापात्र द मोस्ट डायनामिक एंड एजुकेटेड पर्सनालिटी इज अ जेंटलमैन द मिस्टर महापात्र द मोस्ट डायनामिक एंड एजुकेटेड पर्सनालिटी तो ये जो फ्रेज माने ई नाउन सहित मु ई दीटा जिंस ऐड कली द मोस्ट डायनामिक एंड एजुकेटेड पर्सनालिटी एको पोस्ट मॉडिफायर बोली कहबा काहे कि ना मिस्टर महापात्रम को परे रहिला नाउन फ्रेज रे प्री मॉडिफायर्स थाए पोस्ट मॉडिफायर थाए नाउन फ्रेज जदी हेड नाउन पूर्व जो शब्द गुडी को रहिला सेटा प्री मॉडिफायर हेड नाउन परे जो शब्द गुडी को रहबो त हम पोस्ट मॉडिफायर बोली कहबा जेमति कि हम कहली मिस्टर महापात्र द मोस्ट एजुकेटेड एंड डायनामिक पर्सनालिटी इज अ जेंटलमैन हां तो गोटे कथा बेटी मु मन रखिया पड़िबो हेड नाउन परे एवं प्रेडिकेट पार्ट पूर्व जो शब्द गुडी को रहिला सेटा पोस्ट मॉडिफायर so whether it is pre modifier or post modifier they are giving the information about the head noun of the sentence they are followed by the head noun that's why they are called noun phrase when the group of words are followed by the head noun that becomes a noun phrase the pre modifier one example the beautiful tree is standing on the road the beautiful tree here the head noun is tree and what is the pre modifiers the beautiful तो ये दुईटी शब्द व्यवहार कला ट्री पे व्यवहार करा गला तो आको में प्री मॉडिफायर्स बोली कहबा अच्छा तो प्री मॉडिफायर्स से कोन कोन रही परिबो एडजेक्टिव रही परिबो डिटरमाइनर रही परिबो डिस्ट्रीब्यूटिव रही परिबो पॉजिटिव रही परिबो नॉमिनल्स रही परिबो ऑर्डिनल्स रही परिबो जब न्यूमेरल्स बोली हमें कहू इंटेंसिफायर रही परिबो नॉमिनल्स ऑर्डिनल्स कोन कहबो नॉमिनल नंबर्स खाली इंडिकेट करिवो वन शर्ट टू शर्ट्स ऑर्डिनल्स रैंक को इंडिकेट करिवो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन तो पॉजिटिव सब कोन इंडिकेट करिवो माय शर्ट माय हाउस तो सेटा सब पॉजिटिव माय आवर्स तो पॉजिटिव तो प्रीडिटरमाइनर्स प्री मॉडिफायर से सब आसीबो डिटरमाइनर्स भी आसीबो आर्टिकल्स आसीबो ए एंड द पर्सन
the person पूर्व कौन बसिला गोटे दी so it is an article the possessives intensifier most very beautiful person the very टा गोटे intensifier हमें गोटे कथा को जतरा intensify करू that is very so this is all about the discussion regarding the noun phrase. I hope you must have understood whatever I have taught to you. Still, if there is confusions and doubts, you can make it very clear by giving the comments in this channel so that it will be flexible for me to arrange a new session and I'll make it very clear. Thank you. Jai Jagannath.